हेलो फ्रेंड्स। चलिए फिर से स्वागत है आपका हमारे ओन टीचर चैनल में। आपको पता है हम देख रहे हैं साइंस स्टडी यह प्लेलिस्ट। तो आज का हमारा यह तीसरा वीडियो बन चुका है आपके लिए और इसमें आप देखेंगे इम्पोर्टेंट MCQ रिलेटेड टू साइंस और क्लास 6 से लेकर आगे होने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह क्वेश्चंस बहुत ही यूजफुल है। तो एक बार पूरे क्वेश्चंस देखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर? इसमें से नेचुरल पॉलीमर कौन सा नहीं है? सो नेचुरल रबर, प्रोटीन, पॉलिस्टर एंड स्टार्च। सो द करेक्ट आंसर इज polyester. This is not a natural polymer. Sidhu passed electricity through two samples, one containing distilled water while other containing mineral water. He found that galvanometer deflected only in case of sample containing mineral water. What conclusion did he draw from the experiments? यहाँ पर सिद्धू ने एक्सपेरिमेंट किया है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? मिनरल वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग, मिनरल वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, mineral water contains acid, mineral water can be used in boilers. यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी देखो, he found that galvanometer deflected only in case of sample containing mineral water. That means the correct answer is mineral water is good conductor of electricity. Which of the following is a communicable disease? देखिए, कम्युनिकेबल इसका मतलब हम इसे इन्फेक्शियस ऐसा भी कह सकते हैं। सो कैंसर, हार्ट अटैक, मलेरिया एंड डायबिटीज। आपको पता है कैंसर ये कम्युनिकेबल नहीं है, हार्ट अटैक नॉट एंड डायबिटीज ऑल्सो। सो द करेक्ट आंसर इज मलेरिया. Malaria is communicable disease. Why are vehicle tires treated? See, to increase friction, to decrease friction, to multiply friction, to decrease grip. And the correct answer is to increase friction. Frictions means gharshan. That's why we use vehicle tire treated. Next question. The point of initial rock movement along a fault during an earthquake is called the, जो earthquake का point होता है, उसे क्या बोलते हैं? Epicenter, focus, strike और fault zone. And the correct answer is focus. इसे hypocenter ऐसा भी बोलते हैं. Fuel burn to produce heat, light and. फ्यूल के जलने से हीट, लाइट और क्या तैयार होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. एंड द करेक्ट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. So the next question. Which of the following pair of microorganism and disease is wrongly matched? See, यहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिए हैं और उनके डिसीज. इसमें से कौन सा रॉन्ग है यह हम देखेंगे. वायरस, टोबैको मोजैक डिसीज, प्रोटोजोआ, स्लीपिंग सिकनेस, फंगस, एथलेट्स फुट एंड बैक्टीरिया, रस्ट ऑफ व्हीट. इसमें से बैक्टीरिया, रस्ट ऑफ व्हीट ये रॉन्गली मैच किया है. रस्ट ऑफ व्हीट दिस ऑकर्स ड्यू टू फंगी.
rust of wheat. A person pressing his ear on the railway track can hear an approaching train. This is due to, यहाँ पर उस पर्सन को ट्रेन आ रही है यह समझ में क्यों आ रहा है? Why? See some options. Vibration of railway track, vibration of air, more speed of sound in solid medium, hearing ability of the man. देखिए यहाँ पर सही आंसर है मोर स्पीड ऑफ द साउंड इन सॉलिड मीडियम. आपको भी पता है सॉलिड मीडियम में जो साउंड का स्पीड है वह बहुत ज्यादा है. Which of the following is a fossil fuel? इसमें से fossil fuel कौन सा है? Petroleum, wood, cow dung and twine. And the correct answer is petroleum is fossil fuel. Which of the following properties of nylon make it most convenient to use? नायलॉन हम यूज करते हैं लेकिन उसकी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जो बहुत सुटेबल है हमें यूज करने के लिए? इट इज सॉफ्ट, स्ट्रॉन्ग एंड हेवी. इट इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट. इट इज हार्ड, एक्सपेंसिव एंड स्ट्रॉन्ग. नन ऑफ द अबोव. सो इसमें से करेक्ट कौन सा है? इट इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट. सो इट इज most convenient to use. How is the sex of the baby determined? Sex chromosomes of mother, sex chromosomes of father, X chromosome of unfertilized egg, all 23 pair of chromosomes. And the correct answer is sex chromosome of father. A boy feels difficult to pull the two similar rubber suckers apart as shown below. This is because लड़के को ये रबर सकर्स जो है उसे खींचने के लिए हार्ड जा रहा है. So what is the reason behind it? The air pressure is pressing on the sucker with a great force. The air pressure is pressing on the suckers with a negligible force. The air trap inside the suckers is exerting a large pressure. There is no air inside the suckers. And the correct answer is the air pressure is pressing on the suckers with a great force. Which surface among the following will reflect most of the light falling on them? यहाँ पर कौन सा सरफेस है जिससे ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है? फ्लैट सरफेस, शाइनी सरफेस, स्मूथ सरफेस एंड ट्रांसपेरेंट सरफेस. तो लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट होने के लिए सरफेस शाइनी होना चाहिए. सो मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग विल रिफ्लेक्ट. Why are iron objects often electroplated with nickel or chromium? आयरन को निकेल या क्रोमियम से इलेक्ट्रोप्लेटेड किया जाता है. इसकी वजह टू मेक देम मोर एक्सपेंसिव, to make the object shiny, to make the object heavier and denser, to prevent them from rusting. And the correct answer is option number D, to prevent them from rusting. आयरन रस्टिंग रोकने के लिए हम उस पर इलेक्ट्रोप्लेटेड करते हैं निकेल या क्रोमियम से. In which of the following process is chaff removed from grains? ग्रेन्स से
चैफ रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए हम कौन सी प्रोसेस करते हैं? वीडिंग, थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग एंड विनोइंग। हम चैफ निकालने के लिए विनोइंग करते हैं। In which of the following cases does frictional force exist? For moving bodies, for bodies which are at rest, for both moving and non-moving bodies, only for non-living objects. And the correct answer is for moving bodies, frictional force exists. And the next question, energy flow in an ecosystem is in which of the following form? इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होती है वह किस फॉर्म में होती है? मल्टी डायरेक्शनल, अनइनडायरेक्शनल, बायडायरेक्शनल, circular. And the correct answer is unidirectional. What are the products formed when a mixture of powdered iron and copper 2, that is cupric oxide, are heated strongly in a crucible? And the option are: first, iron 2, that is ferrous oxide and copper are formed. Number 2, copper 3, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, यह हमें मालूम है. एंड आयरन 2, दैट इज फेरस ऑक्साइड आर फॉर्म. नंबर 3, iron 3, that is ferric oxide and copper sulfate are formed. And last, no reaction are formed. So the correct answer is option number A, iron 2, that means ferrous oxide and copper are formed. So friends, thanks for watching this video. अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और इसी तरह के साइंस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.